In this video conversation, we are going to cover CUET, which is the Centralized University Entrance Test. ये common central exam है जिसको students को appear करना पड़ता है to get admission into a number of colleges. Some of them are Delhi University, JNU, TIS, and AMIT. We are going to deep dive into the rationale for the exam, the relevance of the 12th boards in the current scenario, the right preparation approach, and the resources for the same. We have Ayushmaan Bhatra and Kinjal Jaiman with us, who's going to answer all these questions. They are phenomenal in their mindset and approach, especially with respect to making most of their college time. Not only are they very driven and focused, but they are also very keen on building a community of students where they are guiding them for their right approach to CUET. तो अगर आप क्लास 11 and 12 में हैं and आप CUET के बारे में 100% clear नहीं है, तो ये पूरा वीडियो कॉन्वर्सेशन देखिएगा एंड वी होप दैट ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द एंटायर CUET preparation and strategy, I want to know how both of you got to know or were made aware of Delhi University. So Ayushman, we'll go with you first. How did you get to know of Delhi University and its colleges, and which one you wanted to enter into? Yeah, firstly, it might sound very, very cheesy when I'm about to, unveil the entire story to you. But yeah, I'll just go ahead with that. So class 4 May, what I did was I asked my dad ki best commerce college kaun sa hota hai. Since my dad, well, best college kaun sa hota hai in general. So my dad is also from a commerce background. He's BCom plus LLB. So he's a lawyer now. So he just said Shri College of Commerce, undergrad level pay. So what I did was I just went down and my net cafe pay. I cannot recall exactly, was it the same day or the day after? बट आई कैन रिकॉल द स्पेसिफिक्स कि मैं नीचे नेट कैफे में गया, आई सर्च SRCC एंड वो क्लॉक टावर देखा एंड बॉय डिड आई फेल इन लव कि मेरे को ये कॉलेज में जाना है. सो हमेशा से ये था. बट उसके बाद में जब आई स्टार्टेड टू ग्रो, क्लास 9 में मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा, देन आई स्टार्टेड टू रिकलेक्ट और मतलब इट मेड सेंस टू मी कि मोर ऑफ मनी विल नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम. तुम्हें मनी को मैनेज करना सीखना होगा. सो फाइनेंस एज अ लाइक सब्जेक्ट स्टार्टेड टू इंट्रिग मी मोर. And I was like, चलो अब कॉमर्स ही लेते हैं. That would make more sense for me as a career perspective. And then फिर God was fortunate enough to कि मैं SRCC में हो गया. So that's been the story. You started in class 4. Yeah, class 4 में पता चला. I know मतलब थोड़ा वैसे cheesy सा लगता है, but yeah, that's what it is. Little storybook kinds, but yes, I am sure this is how you must have been aware. But no, nice, very interesting. I would say very young age. That I would agree. Yes, Kinjal, what Thank about you. you? So first of all, I got to know about BU in class 9. Until class 8, I was like, ठीक है, academic focused बच्ची, and you used to solve maths question. I was weak in maths. I was, totally into that zone. But in class 9, when, there was a subject जो इसकी बातें होती थी, so and I got to know about DU from my mother. Like my mother used to say, like DU is a DU is a good university, and I wanted to always go there and stuff like that. But when I came in class 11, I searched about the best commerce college in India because, definitely class 11, when I took commerce, I was very passionate to get into best colleges because, the environment attracts you, right? So I searched SRCC and then the clock tower, and then it never stopped. Honestly, used to write SRCC at all my tables. Still, it is written on my table right now. When I used to study, I used to dream about SRCC all day, all night, and I used to work for it. And that's how I came across SRCC, DU, and stuff. That's it. That's my story. I think very, very motivated from my time. I just knew SRCC was top commerce college. And I had a very different journey. I got a very good score. A relative of mine told me, you should apply to DU. Then I'm like, yes, I can apply to DU because I was from Kolkata. So getting into St. Xavier's College, Kolkata was also a feat in itself. So I was happy with St. Xavier's College, Kolkata. And then I applied to DU because, and that too, I was not of the mindset at that time that I wanted to go to Delhi for BCom. Like, who goes outside their hometown for BCom? That was a little of my mindset. But then that's when I came to SRCC, and the environment is something that is very addictive in a way, in a very positive manner. Enthusiasm. Yeah. But Yes, ma'am. very motivated kids, I would say. Very young, God, you guys are very clear. Very nice to see that. So now I wanted to know a little on the course, coming to the course. So what was the major thought process or rationale behind taking a BCom honors over any other course, like say Econ honors, statistics honors, like any other course out there? ओके, आई लाइक टू टेक दिस वन. तो इस रिगार्ड में ना मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बिकॉज मेरे को वो करना था रिस्क.
जो होता है ना, सिंस आपने तो एफआरएम कर रखा है, आप जानते हो रिस्क मैनेजमेंट इतना ज्यादा लोग करते हैं अच्छे तरीके से, तो मैं भी बहुत अपने लेवल पे 11th 12th में मैं भी ऐसे प्लान करा था कि रिस्क मैनेज करना है, क्या पता है एसआरसीसी में नहीं हो तो क्या। सो आई वाज लाइक कि एसआरसीसी नहीं हुआ, funny that you mentioned about Xavier's, right? So I've gone to Xavier's for 2 months. That was my backup college. कि in case SRCC didn't work out, तो मैं वही रहूंगा. So वो था. But still there were two other colleges कि अगर मतलब these were the three colleges कि अगर Xavier's नहीं तो इन तीन में जाना है. These are the best ones. That was मतलब obviously SRCC, फिर Saint Stephen's and SSCBS. So I had given 7 subjects CVT में. Minimum criteria होता है 4 subjects का, but मैंने 3 extra दिए थे. एंटरप्रेन्योरशिप, फिर मैंने एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ही होगा, अकाउंट्स मैथ्स दोनों दिया, तो दैट इज वन. एंड फिर जनरल टेस्ट भी दिया था. अल्टीमेटली जो बीबीए बीएफआई जो कोर्स होता है या बीएमएस के कोर्सेज होते हैं उसमें जनरल टेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है. सो दैट इज वाई जनरल टेस्ट दिया था सुखदेव उस कैटेगरी से. एंड मैथ्स पे ज्यादा एफर्ट दिया फॉर इको ऑनर्स. एंड अकाउंट्स में था, अकाउंट से मैथ्स में से बेस्ट लिया जाता है, बट आई नो कि मैथ्स से ज्यादा स्कोर अकाउंट्स में आता है लोगों का, तो अकाउंट्स में भी फोकस था फॉर बीकॉम ऑनर्स. तो इसमें फॉर्चुनेटली सिंस मेरे मैथ्स में 100% था, एंड दैट वाज द बेस्ट वन. एंड बाकी 4 और सब्जेक्ट में थे, इंग्लिश में, इको में, बीएसटी में एंड एंटरप्रेन्योरशिप में. तो मेरे 5 में 100% थे, एक में 99.8 इन जनरल टेस्ट एंड अकाउंट्स में 99.2%. सो सिंस मेरा ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर एकदम मतलब वो फुली बन रहा था एक तरीके से. सो आई वाज मेरा सिंगल डिजिट रैंक था बीएफआई इको ऑनर्स दोनों के लिए, एंड बीकॉम में भी अच्छा रैंक था. बेसिकली आई वाज कन्वर्टिंग ये तीनों ही. सो एट दैट पॉइंट मेरे को ये हुआ कि क्या करना है मेरे को, कोर्स एंड एवरीथिंग. सो मेरे लिए ये क्लियर था कि कॉलेज का प्रेस्टीज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट लॉन्ग रन में, राइट? अगर तुम्हें इंटरनेशनल जाना है या लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो इन टर्म्स ऑफ कोर्स मैं ऑनेस्टली बोलूंगा जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोर्स है वो एसएससीबीएस का ही है. इन टर्म्स ऑफ अगर तुम्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो बीएफआई है, अगर तुम्हें मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो बीएमएस इज अ वेरी वेरी गुड कोर्स, बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, राइट? बाकी इको ऑनर्स विल रियली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ रिसर्च वगैरह. बट मेरे को था कि इको ऑनर्स जिनको देखो, सबसे पहले तो अ वर्ड ऑफ कॉशन, जो इको ऑनर्स लेता है पहले मान के चलो मैथ्स ऑनर्स होता है, ठीक है? सो वो चीजें जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं है तो फिर दे शुड नॉट आइडियली गो फॉर इको ऑनर्स, बिकॉज उसमें मैथ्स बहुत ज्यादा होती है. हाउएवर आई लव्ड मैथ्स, मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है. बट स्टिल मेरे को ये था कि मेरे को बीकॉम या तो बीएफआई वगैरह टाइप्स लेना था, इको तो नहीं करना था, बिकॉज आई वाज क्लियर कि आई वांट टू डू लाइक मेरा खुद का स्टार्टअप टाइप्स करना है या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं. सो दैट वुड नॉट लीव मी एनफ टाइम इफ आई वर टू डू इको ऑनर्स. सो दैट वाज वन. अगेन कुछ लोग मैनेज करते हैं, प्रॉप्स टू देम, बट आई पर्सनली वांटेड मोर टाइम उस केस में. सो इट लेफ्ट मी विद एसआरसीसी या फिर एसएससीबीएस. एसएससीबीएस इज एन अमेजिंग कॉलेज, बट मेरे को ये था कि एसआरसीसी का ब्रांड वैल्यू अगर लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ज्यादा है. लाइक वो थोड़ा ओवर अचीवर वाइब्स आते हैं लोगों से, जो लोग होते हैं. आप देख ही सकते हो श्रेया मैम इतना कुछ अचीव कर रखी है. सो अगर हमारे एलुमनाई इतने अच्छे होते हैं तो ऑब्वियसली यू गेट लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेशन, राइट? सो या एसएससीबीएस भी बहुत अमेजिंग है, बट अगेन एसआरसीसी नॉर्थ कैंपस में आ जाता है एंड यू इंटरेक्ट विद द बेस्ट पीपल. कॉलेज का बहुत टाइम से वैल्यू है, अ लॉट ऑफ पीपल नो इट इवन बियॉन्ड नॉर्थ लाइक एरिया, राइट? नॉर्थ इंडिया उसके बाद. सो दैट इज व्हाई वेंट अहेड विद एसआरसीसी. एंड यहाँ पे बीकॉम वर्सेस इको में इट वाज क्लियर कि बीकॉम ही करना है, व्हिच वुड लीव मी मोर टाइम. So that was pretty much it. So you were mostly in towards BCom or BMS, these kind of courses, which gives you some leverage. तो मुझे थोड़ा leverage दे, थोड़ा flexibility दे. हाँ, आई पर्सनली थिंक इस चीज में आई लाइक टू हैव होलिस्टिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कि एक ही चीज पे ज्यादा वो नहीं करना, एक जनरलिस्ट बनना है. मतलब आई वांट टू नो इन डेप्थ हर चीज का, बट स्टिल हर चीज का होना चाहिए. लाइक हर चीज में आई वांट टू नो एवरीथिंग, ताकि व्हेन आई एम कन्वर्सिंग विद समवन या व्हेन आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग, तो एक नॉलेज बैरियर एक्ट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे अभी आई एम वर्किंग ऑन अ क्लाइंट कोई कंसल्टिंग प्रोजेक्ट पे, तो आई एम वर्किंग विद आईआईटीएंस जहाँ पे हम लोग एआईएमएल यूज कर रहे हैं. सो मैं अपने इंटरेस्ट से ही थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ ये सब चीजें क्या है, कैसे वर्क करती है. नहीं तो फिर कोई और नॉर्मल कॉमर्स स्टूडेंट समझेगा तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. बट सिंस आई ट्राई टू बी अपडेटेड विद दिस थिंग्स, थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स. तो इसीलिए मेरे को होलिस्टिक एंड ओवरऑल जनरलिस्टिक वाला एजुकेशन टाइप पसंद है. मेक सेंस. नॉट तुमको अभी नीश नहीं करना है, ठीक है? तो सीयूईटी अभी रिसेंटली आया है एंड इट इज टैकलिंग फ्यू ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. एंड so given you guys have given the first batch of the exam, what are your thoughts on the rationale behind bringing out CUET and what problems does it take? Kinjal, we'll go ahead with this. Perfect. I think it provides a major platform for students from all over India to, like prepare for national level exam, prepare for the best colleges. Let me tell you how. So, but earlier what happened was there was a large crowd from southern India in the best commerce colleges like SRCC. Like let us take example like Karnataka and Telangana, because these boards, used to give a lot of,
we can say a lot of marks in their board exams compared to CBSE, right? So they used to score 100% and they used to get into colleges. While CBSE students, they used to lack in subjects like English, like because language was considered one of the best four, right? So it was a major problem I see, because diversity inclusion nahi tha in time of boards. I feel like same happened with me as well. I did not perform very good in English. Like it was a very good score above 95. But if I consider it for, best four, so I'm little unsure what would have happened, right? So CUET is a rational approach. CUET is a very good approach in the modern times as well, where everything is conducted through entrance exams and stuff. CUET provides a very good national base to all students from all sides, from all boards to present themselves, whether it's from any board, ISC board, CBSE board, anything. So when we have CUET, we have a common exam for everyone, whether anyone from any side. So there is no disadvantage from the school side ki, school se zyada marks mil gaye the, internals mein zyada marks mil gaye the. There's nothing like that. You are a fresh person in CUET, you are a fresh candidate in CUET, you are competing with lakhs of students, and that what, like, if you ace that, that's what makes you different, right? And it is a very good approach towards the education sector as well, towards our colleges as well. We have a better crowd if we have CUET. We have better exams if we have CUET. Better level of exam. We have general tests, English, which are like analytical courses and subjects. So it is good. Like it is a very good approach in the education sector as a whole. More inclusive platform for diversity and inclusion Right. pride. So we'll break down into what all are the curriculum or the portions of the CUET. Like the major, I think there must be few compulsory portions also. And what is the preparation approach? So we'll start with the portions and then we'll go to the preparation approach. Kinjal, we can go ahead with you as well. Okay, so सबसे पहले portions के लिए there are different eligibility criteria for different courses, but major what stands like common is your domain subjects. What you studied in class 12 will definitely come in CUET, like you cannot skip that. So the major portion of what you study in class 12 as a class 12 board student is very important in CUET. That's the only curriculum you have. Yes, subjects like there are certain criteria, like you have to appear for math for eco honors, general test for BMS and stuff. These are separate criteria, but Ayushman would also agree that domain subject are the major curriculum for any course out there, whether it's humanities, commerce, or science, right? So Absolutely. how to go about it? What you like? I have seen an approach in students that okay, so CUET, why to prepare for boards? Why to study for class 12 approach? No. What you like take our example ना, we हमें तो पता भी नहीं था कि हमारा CUET होना है. We used to study like we are studying for class 12. Me and Ayushman were studying the same way, like we have to prepare for boards and then we'll get into SRCC if we get good percentages, right? Still we ace the CUET exam, right? So why not you guys? So that's the type of mentality I want in my juniors as well, that the way you study in class 12 also affects your CUET. So basically, what you are studying in class 12 is your CUET. But CUET mein you have to have a very understanding approach, deep, understanding of the concept as well. For example, in boards you write subjective papers, right? Right. So you don't have to memorize each and every concept. Okay, headings yaad kar liye and then we'll write the you know content. But in CUET, you have to be very conceptual. You have to be the conceptual. You have to be very conceptually clear with the concepts. What all MCQs are to be taken. You have to take mocks. So that's a different approach. But the way you study in class 12 definitely affects your CUET score and your preparation. Okay. So your class 12 curriculum is the base for your CUET exams. However, the way they are tested is थोड़ा वो different है. Yes. So Right. कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स है क्या जो सारा कॉमन है कि आर देयर सम सब्जेक्ट्स कुछ ऐसा लाइक सो बीकॉम के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स है? So BCom, there are two eligibility criteria. First, English is compulsory. A language is compulsory, English or any other language from the language list that is given in the Delhi University curriculum or the CUET curriculum. Apart from that, there are two options. Either you have to give accountancy plus domain subjects,
like your domain subjects, whatever domain subjects you have, or either maths or domain subjects, that is business studies, business studies, economics, any other domain as well. Science students also give paper eligibility for BCom honors like courses, right? So maths plus domains and accountancy plus domains. So that's the two combinations you have. तो बाय डोमेन सब्जेक्ट्स इसका मतलब है कि जो भी हम लोग 12th में पढ़े हैं वो होगा Right, मैथ्स, इंग्लिश, वन मोर लैंग्वेज सब्जेक्ट लाइक से हिंदी, देन इकोनॉमिक्स, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है यूजुअली, right. राइट? Right, there's a list given. Actually, there's a list given. Two lists are given. Like you have to, choose two subjects from list B1, two subjects from B2, like that. And once the language is compulsory. Okay, okay, ठीक है. Wanted to know this. Thank you, Kinjal. So, while we are preparing for exam, mock papers are also extremely relevant. So, how can we go? How can students go about the mock papers, and what are some of the resources that you guys can recommend as reliable? Ayushman, how would you like to go with this? या श्योर. ठीक है, रिसोर्सेज का तो बताऊंगा. लाइक अभी सिंस वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेपरेट कोर्स वाइज डिविजन्स, राइट, एज फार एज योर बीकॉम एंड इको ऑनर्स वाज कंसर्न्ड. विद रिस्पेक्ट टू, आप बता रहे थे ना सीयूटी का चेंज क्या हुआ. सो लाइक इस चीज पे ना मैं स्टिल आईड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग कि जैसे बीकॉम का क्राइटेरिया तो यही है, इंग्लिश तो है ही. सो उसमें ना एक लैंग्वेज का पूरा सेक्शन है, 26 लैंग्वेज ऐसे कुछ करके है. You have to just take one. So, like you mentioned Hindi, right? So, if you have Hindi or English, तो only the best one would be considered. So, you can give many languages, but ideally it's preferred कि एक ही दो, since English usually everyone gives that and that is considered. So, you can do that. Besides, the language portion is usually very easy. थोड़ा बहुत basic, rudimentary grammar रहता है, but you can go ahead with that. It's not a very big issue. Practice is the main aspect here. So, apart from that, the main distinction becomes with respect to domains. Domains क्या है? Domains is just the जो तुमने बोर्ड एग्जाम में दिए सब्जेक्ट्स जस्ट वही होते हैं. बस दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन एक लॉ है, which is why I wanted to take this part, कि you can only consider those subjects for your CUT as far as DU is concerned. बाकी universities it's up to them. However, as far as DU is concerned, you can only consider those subjects for your CUT या फिर तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए, the ones that you have given in your board exam. For example, let's say आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपका बीकॉम के लिए जस्ट लाइक किंजल हैड मेंशन्ड, या तो मैथ्स होना चाहिए, अकाउंट्स होना चाहिए, कोई और दो डोमेन. अगेन वो दो डोमेन और हो, यू शुड हैव आइडियली गिवन देम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड तुम्हारा कोई लैंग्वेज. सो लेट्स से यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट, तुमने ड्रॉप लिया, तुम्हें मैथ्स पसंद ही नहीं थी, ठीक है, तुमने मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करा और अकाउंट्स, इंग्लिश करा. यू गेव योर सीयूटी का फर्स्ट अटेम्प्ट, मान लो मेरे और किंजल के वाले सेम बैच में, बट उतना अच्छा नहीं हुआ बिकॉज यू डू नॉट लाइक मैथ्स, ठीक है, यू डू नॉट लाइक साइंस के सब्जेक्ट. हाउएवर व्हेन यू टेक अ ड्रॉप, तो when you're appearing for CUET, let's say वापस दोगे, in that case you can shift to commerce, but तुम्हें shift करना है commerce, but you'll still have to give those science के subjects ही, because you cannot switch the subjects that you are appearing for. अगर वो board exam से different नहीं हो सकता, it has to be the same one that you have given in your board exams. So that becomes a problem. However, it is also easy in one aspect. For example, कोई humanities के student को science में जाना है, मतलब साइंस का कोई कोर्स करना है, गिवन दैट दे हैव मैथ्स, राइट, ह्यूमैनिटीज प्लस मैथ्स वाले बहुत होते हैं, सो यू कैन गो टू सीएस ऑनर्स या फिर स्टैट्स ऑनर्स, यू कैन डू दीस थिंग्स. So in that, even maths honors, for example, so I've seen a lot of humanities students switch to maths honors because they were good at maths, and maths उनका criteria बनता है. Maths honors, stats honors के लिए the only requirement is language होना चाहिए, maths compulsory है, and any two domain. So you can switch. However, in that case, you do not need to study physics or chemistry. You can study your existing humanities का subject. So then it becomes easy. The only problem is for science students who do not want to study science, because if you have taken science under the pressure कि 11-12 में science कर लेते, बाद में देखा जाएगा, तो तुम्हें science पढ़ के ही switch कर. Right, right. I just wanted to clear that. Now on to mock test. So yeah, Shreya, would you like to add something? I think. Yeah. So it is basically domain plus language subject plus वो course का जो कोई compulsory subject हो, like maths, accountancy, course related. Right. एब्सोल्युटली. उसके अलावा एक जनरल टेस्ट और होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एसएससीबीएस के लिए बताया था, राइट. सो जनरल टेस्ट अगेन इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे आईपी मैट वगैरह में लोग देते हैं, फॉर एग्जांपल कैट एग्जाम में लोग देते हैं, राइट. सो जो एप्टीट्यूड पोर्शन रहता है, जनरल टेस्ट एग्जैक्टली वैसा रहता है. द ओनली थिंग एडेड इज जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस. दैट इज बेसिकली व्हाट जनरल टेस्ट इज. इट्स अ क्यूमुलेटिव सेट along with quants, LR and your GK. So ये जो जनरल टेस्ट होता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर बीकॉम ऑनर्स, नॉट रिक्वायर्ड फॉर इको ऑनर्स और एनी प्रोग्राम कोर्सेज एज सच, राइट. प्रोग्राम या फिर जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं उसमें नहीं होता. प्रोग्राम में तुम्हें ऑप्शन मिलता है, या तो तुम 3 डोमेन कर लो along with लैंग्वेज, या तो तुम एक डोमेन रख लो, जनरल टेस्ट रख लो और एक लैंग्वेज रख लो. सो उसमें प्रोरेशन होता है, एक बेसिकली अप्रोक्सीमेशन होता है, जो भी तुम्हारा बेस्ट कैटेगरी बनता है अप्रोक्स दीस टू में से. तो प्रोग्राम कोर्सेज, फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, उसके लिए इनमें से जो बेस्ट होता है वो लिया जाता है, along with कुछ में कंपलसरी होता है. फॉर एग्जांपल if you consider BFIA, right, BBFIA
जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स होता है वो है, या फिर तुम्हें बीएमएस करना है एसएससीबीएस से या कोई और कॉलेज से, उसमें जनरल टेस्ट कंपलसरी। सो दैट इज अबाउट जनरल टेस्ट। अब एज फार एज मॉक्स का कंसर्न, राइट, मैंने इनफैक्ट आई एम श्योर किंजल ने भी बहुत सारे दिए थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, आई हैव गिवन 300 प्लस मॉक्स। लाइक जेन्युइनली सीयूटी जब तक खत्म हुआ था मैं सबसे ज्यादा मॉक्स ही देता था। मेरा रूटीन यूज्ड टू बी लाइक आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली 4 or 5, आई यूज्ड टू रिवाइज ऑल द कंटेंट जो मैंने पिछले दिन पढ़ा था, एंड देन आई यूज्ड टू गिव मॉक्स फ्रॉम 9 to 12:15, ये सेट होता था 4 का, एंड देन आई यूज्ड टू रिवाइज इट। फिर 3 to 5:15 एक और सेट देता था। सेट इस टाइम पे ही देने का कारण ये था बिकॉज सीयूटी के स्लॉट्स ही होते थे। सो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि इसी स्लॉट पे मेरे को एग्जाम देना है ताकि मेरा माइंड भी उसी टाइम बेस्ट फंक्शन करे। रेस्ट ऑफ द टाइम टू स्पेंड अराउंड एनालिसिस। शाम को जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाता था, टू जस्ट रिवाइज ऑल द कंटेंट एंड बैक अगेन इन द मॉर्निंग। सो दैट इज हाउ इट यूज्ड टू गो। तो मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगेन सम ब्रांड्स दैट आई कुड मेंशन, जैसे टेस्ट बुक का मैंने करा था, एजू कैप्टन का करा था, प्रथम का भी देखा था। अगेन बहुत सारे रिसोर्सेज है, यू कैन गो हेड एनी पिक ऑफ योर कॉल। बट आइडिया इसकी जो तुम्हारा मॉक टेस्ट होना चाहिए ऑनलाइन होना चाहिए, बिकॉज जो एनटीए का एग्जाम है सीयूटी, इट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो तुम्हें कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने ही बैठ के तुम्हें देना होगा जो एनटीए के सेंटर पे होगा। सो आइडियली यू शुड गेट योरसेल्फ acquainted with the online system so that you are best able to give that test. So that is what I'd recommend. As for subject specific, यार again mostly जो तुम बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहे हो that would be good enough. There would be some additional part of the syllabus. You just have to cover that. YouTube video से कर लो या फिर कोई और lectures देख के कर लो, या even you go through your material. For example, economics में you have your Indian eco and you have your macroeconomics and microeconomics. तो जो first two है macro and Indian eco are usually done in your class 12. Microeconomics 11 में किया जाता है। ये हर साल सीबीएसई कभी कभार चेंज करती रहती है। इनफैक्ट इफ यू हैव टू रिकॉल, आई थिंक आप लोग के टाइम में था मैक्रो माइक्रो क्लास 12 में, इंडियन इको 11 में। दैट यूज्ड टू बी द केस। हाउएवर हमारे केस में इंडियन इको एंड मैक्रो सेकंड में 12th में, एंड इंडिया जो क्या नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स 11 में। सो इन दैट केस तुम्हें ये तीनों ही आने हैं तुम्हारे सीबीटी में। सो जो माइक्रो जो पार्ट है एसेंशियली जो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो तुम्हें माइक्रो आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स तुम कर सकते हो। सो हल्का फुल्का एडिशनल पार्ट रहता है, हल्का फुल्का पार्ट रहता है जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया अपने पार्ट में। अगेन वेरीज फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड, बट वो एडिशनल पार्ट थोड़ा करना पड़ता है एज फार एज डोमेन्स आर कंसर्न। वर्बल के लिए अगेन मॉक्स दोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। सेम गोज फॉर जनरल टेस्ट। सो प्रेपरेशन का यही है, एज लॉन्ग एज योर बोर्ड्स आर सॉर्टेड, योर डोमेन्स आर सॉर्टेड, तुम्हें बस एडिशनल प्रैक्टिस करना होगा। वर्बल वगैरह के आइदर यू कैन गो फॉर अ कोर्स या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख लो एंड देन मॉक्स प्रैक्टिस कर लो। सेम गोज फॉर जनरल टेस्ट। तो मॉक्स के लिए अगर टॉप टू like would you like if you can go ahead with top two reliable resources, or is that? हाँ हाँ, श्योर श्योर। मैंने अपने टाइम में एजू कैप्टन का तो मैंने फुल फ्लेजेड कोचिंग ले लिया था, तो उसमें आई गॉट द मॉक्स, वो अच्छा था। एंड टेक्स्ट बुक का मैंने करा था, टेक्स्ट बुक का मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था। मेरे को मैथ्स वाला में थोड़ा इश्यू लगा था टेक्स्ट बुक में, बिकॉज हमारा कोर और अप्लाइड मिक्स ही करके दे दिया था। आई होप दैट सॉर्टेड नाउ। बट बाकी द रेस्ट ऑफ इट वाज वेरी गुड। जनरल टेस्ट का आई गॉट 30 के अराउंड सेट्स, तो उसमें मैंने सारे कर लिए थे, एंड मैंने बाकी के भी करे थे, बट मेरे एक्सपीरियंस में ये दो बेस्ट। Okay, thank you. तो अभी current scenario में, given that we have CUET, how relevant are board exams? So I think now we can talk about its two parts. One is the preparation and one are the marks. So I think the preparation is relevant for your CUET syllabus. How relevant are the board results now in the current scenario? Kinjal, if you would go ahead with this question. Okay. So let me give an example, a very, very, a relatable example. Example, the cutoff of CUET SR, like for SRCC, is 780.5. I have the best score of 98%, and the other person has the best score of 98.2%. What happens is after the CUET result, after you apply for DU, there is a simulated rank list that is, out. That is based on your CUET score. Of course, first that is the criterion. Then are your board marks. So even if you have the same CUET marks, the person who has the best score, like better best score than me, like will get the college, like SRCC, right? Just matter of 2 marks will get that person into the dream college, despite despite having the same CUET score. So that is the basic relevance of board marks, in my opinion. It decides it like even each marks matters. Like you never know what will happen. You are on the edge of any cutoff or not. So preparation is important for CUET, but the marks are also very important for your college. What rank you get, rank you get, and then what is the cutoff? Like I just gave an example of 780.5 wala. So it is very, very important. Even like
No, I scored the same score, but still I was not able to get into my dream college due to my board exams. So this was a very slight example. People have a huge rank difference due to board exams only, right? Ayushman would definitely relate to that. Like I have one of my friends who scored 800. So I had a rank of 7. She has a rank of 20 or 21. So there is a difference, right? So that's what the importance of board exams. So for over here, so how is the calculate? Any idea on how, any visibility on how the calculation is done? Is it like a half of the CUET and board exams, or how is it done? So first of all, the CUET score is considered. Hmm. CUET score. Then, if you have matching CUET scores, then best of three, and best of four, something like that, and then best of four, something like that. Best of three, best of four, best of five. That's the sequence. So you understand, right? It is very important. Okay, so because many people can have same CUET scores, that's why then the second Exactly. way of filtration is the board exams. Okay, this is now quite a competitive scenario now. So Ayushman, if we would go ahead with this you on this question. So what timeline would you recommend for the CUET preparation, given now that even the board exams are relevant? CUET preparation is equally relevant. So what according to you should be a decent approach or the decent time to start with the preparation of CUET? ठीक है. Firstly, people should start, जैसे किंजल has already explained it in a very good way, कि you should not like consider कि board exam अलग है. It is also a part of CUT. In fact, CUT extended board exam है एक तरीके से, कि तुमने अपना एक attempt दे दिया, अब तुम्हें CUT वापस से proof करना है. It's just that the manner is different. Subjective एक में तुमने दिया, अब तुम objective में test कर रहे हो. Ultimately, you are being tested in both the ways. Board exam की still relevance है, because अगर CUT में anything like since it's an objective exam, एक भी अगर तुमने mistake की तो तुम्हारा score बहुत नीचे जा सकता है, rank बहुत जा सकती है. In that case, you should ideally have a very good backup college जो board exam के through लेते हैं, right? So for me that was Xavier's Kolkata. वो लोग still board exam के through लेते हैं. So since I scored 98% in my class 12 board exams, तो उससे मेरा हो गया था, maths included. तो मेरे को यही बढ़िया था, because you know I always had that safety net कि in case CUT में ना हो, at least मैंने अपने boards में अपना best दिया है, so that I can go to a very good prestigious college even if things go south. तो board exams provide you a safety net in that aspect, right? But इसका श्योर नहीं है कब तक रहेगा, because even Xavier's में move to an entrance exam based completely, right? तो वो चीज है. However, you still need to consider board exam, because तुम्हारे placements में भी एक तरीके से दिखता है वो, right? जब तुम अपने resume में डालते हो, फिर तुम्हारे IIMS में भी वो देखा जाता है. इनफैक्ट IIM इंदौर का तो heavy weight होता है, like बहुत ज्यादा heavy weightage रहता है with respect to your 10th and 12th. So they still hold a lot of value. Even in terms of CUT, जैसे किंजल ने बताया, if your scores are tying, for example 780.5 is the last cut off, and दो लोगों का या चार लोगों का वो है, so then your best of 3 would be considered. जैसे किंजल ने करेक्ट कर देता है, बेस्ट ऑफ 3. सो पहले बेस्ट ऑफ 3 वुड बी कंसिडर्ड, एंड अगर वो भी अगर टाई है, देन योर बेस्ट ऑफ 4 वुड बी कंसिडर्ड. आइडियली अगर बेस्ट ऑफ 3 में किसी का ज्यादा है तो उन्हें वो मिल जाएगा, बट अगर उसमें भी टाई है तो बेस्ट ऑफ 4 होगा, एंड उसमें भी टाई है तब एज कंसिडर होगा कि जो ज्यादा एल्डर है उसको मिल जाएगा. सो इसमें उन्होंने पूरा बना के रखा है कि कुछ भी वो हो जाए, कोई हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए नहीं आना पड़ेगा, बिकॉज पूरा अपने आप ही ऑटोमेट हो गया, तुम्हें रैंक मिल जाता है. इसीलिए ऐसा है कि इवन विद पीपल हु आर स्कोरिंग 800 में 800 फुल मार्क्स, still they would have a rank. जरूरी नहीं है सबका वन ही रैंक हो, राइट? ड्यू का CSAS पे, बिकॉज द रैंक इज देन डिवाइडेड एज पर योर बोर्ड एग्जाम्स. तो वो चीज है. As far as timeline is concerned, now that you know कि board exams important है, you need to consider it as a part of board exam. So ये मैं students को बताता हूँ cake strategy. हमेशा मैंने पिछले साल से हर जगह पे यही बताता हूँ. So cake strategy ये है कि you need to visualize your entire preparation का पूरा जो journey है as a cake, कि तुम cake prepare कर रहे हो. Firstly you have the base, then you have the frosting, and then उसके ऊपर जो final decorations होते हैं, candles and everything. So as far as the base is concerned, that is your notes. तुम्हें basic notes बनाने हैं, तुम्हें अपने concepts को strong रखना है. So firstly जब तुम अपने boards के लिए पढ़ते हो, you go through a DK Goयल के illustrations या जो भी तुम concepts lectures देखते हो, that is your conceptual building, right? And then तुम अपने main preliminary notes बनाओगे उसके through. ठीक है? उसके बाद में तुम्हारा आता है frosting of the cake. In that case, what you are essentially doing is तुम उसमें क्या बोलते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर रहे हो अपने बोर्ड्स के. फॉर एग्जांपल अगर तुम CBSE के स्टूडेंट हो तो तुमने उसके PYQs को एनालाइज किया एंड फिर सैंपल पेपर दिया. इन दिस केस योर कंसेप्ट इज बीइंग सीमेंटेड, व्हिच इज व्हाई आई से कि ये फ्रॉस्टिंग जैसे है, राइट? सो इसमें तुम्हारा कंसेप्ट सीमेंट हो रहा है, एंड यहाँ पे व्हाइल यू आर रिवाइजिंग, तो तुम्हारा जो एक्जिस्टिंग नोट्स थे जो तुमने फर्स्ट टाइम बनाए, यू आर मेकिंग इट इन अ मोर लाइक ब्रेविटी, राइट? ब्रेविटी होता है, यू आर मेकिंग इट इन अ मोर कंसाइज मैनर, कि तुमने उसको बहुत छोटा कर दिया ताकि बोर्ड्स के टाइम पे तुम कर सको. तो दैट इज सेकंड पार्ट. जब तुम बोर्ड एग्जाम दोगे तब तुम अपने उस नोट्स को और छोटा करोगे, ताकि जब CUT आएगा तो वो 1 पेजर नोट से रहे, बहुत बेसिक माइंड मैप से रहे,
कि तुमने ऊपर ऊपर से देख लिया, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 5-5 दिन का गैप मिल जाता है एट मैक्स, यूजुअली ऐसा ही रहता है हर एग्जाम के बीच में। बट एज फार सीयूटी इज कंसर्न, तुम्हारे 3 से 4 एग्जाम एक ही दिन में होते हैं। फॉर सम पीपल ऑल एग्जाम्स आर इन जस्ट वन सिंगल डे, इट डिपेंड्स ऑन योर स्लॉट, बट दैट इज हाउ इट गोज। सो इन दैट केस यू नीड टू हैव वेरी कंसाइज नोट्स। सो ये तुम्हारा प्रैक्टिस वाला में स्टेज 2 में हो जाएगा। स्टेज 3 इज जैसे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खत्म हो, यू शुड गेट स्टार्टेड विद सीयूटी। जो डिलीटेड पार्ट है उसको 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीट करो एंड देन गेट स्टार्टेड विद मॉक्स। उसके लिए मैंने अपना शेड्यूल बता ही दिया था। यू शुड आइडियली वेक अप, रिवाइज, फिर मॉक्स दो, फिर एनालाइज करो, फिर और मॉक्स दो, फिर एनालाइज करो, एंड देन फाइनली जस्ट रिवाइज एवरीथिंग दैट्स लेफ्ट। Okay. सो दैट इज व्हाट द टाइमलाइन। बेसिकली बोर्ड्स के लिए पढ़ो द वे वन Hmm. शुड बी स्टडिंग, एकदम सिंसियरली, एंड बोर्ड्स होते ही like in a week or so brush up on the additional parts, and so basically and then give your mocks. So Hmm. boards होता है एवरेज में मार्च के अराउंड, फेब एंड से मार्च के पीरियड में, एंड Hmm. सीयूईटी मई के अराउंड होता है, मई फर्स्ट हाफ, Hmm. लाइक बिफोर द Yes. फर्स्ट हाफ ऑफ मई. So it gives you an average of 1 to 1.5 months max. उससे ज्यादा नहीं है, तो Hmm. ऐसे ज्यादा टाइम नहीं है, तो मई तक थोड़ा ड्रिल चलेगा बेसिकली. दैट्स व्हाई एन एक्सटेंड. Right. अब उसमें भी ये होता है ना कि यूजुअली थोड़ा डिले हो जाता है सीयूटी। इस बार होपफुली स्टूडेंट्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट यूजुअली डिले हो जाता है अच्छा खासा, एंड देन फिर तुम्हारे स्लॉट्स भी आगे पीछे हो जाते हैं। यूजुअली एग्जाम ही 1 महीने तक चल जाता है, समटाइम्स इवन बियॉन्ड। सो इन दैट केस तुम्हारा क्या होता है कि मे बी यू हैड वन एग्जाम एट द वेरी बिगिनिंग, वन एग्जाम लेट। तो किंजल के केस में तो जो फर्स्ट एग्जाम, जब फर्स्ट डे सीयूटी कंडक्टेड था 15 जुलाई, उसके सारे पेपर उसी दिन थे। मेरे 3 पेपर उस दिन थे। मतलब टर्न्स आउट, मतलब लक ऐसा था कि हम लोग दोनों एसेंशियली 3000 किलोमीटर अवे सेम टाइम पे सेम पेपर लिख रहे थे। मतलब वही हमारा सेम स्लॉट ही था, मतलब जहां तक अकाउंट्स, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स का कंसर्न। इसका इंग्लिश भी था, मेरा इंग्लिश फिर जैसे 15 जुलाई था ना, इसका जब पूरा था, मेरे 15 जुलाई को 3 था, फिर 4 अगस्त को मेरे 4 थे। देन उसमें से 4 अगस्त को मेरे 3 हुए थे, जनरल टेस्ट नहीं हुआ टेक इश्यू के कारण। देन मेरे को वापस से 22 अगस्त को वो आता है एडमिट कार्ड की तुम्हारा 24 को एग्जाम है, तो मैंने 24 को दिया। फिर वापस मैंने चारू दिए, तो इन उसमें फिर मेरे को रिजल्ट मिला। तो जो मेरा 4th एंड 24th था, मेरे को उसका दोनों का रिजल्ट दिख रहा था। तो जो 3 मैंने दिए थे 4th को, उसमें तीनों में फुल थे, एंड 4th को जो 3 मैंने अगेन पिछली बार दिए थे वो सेम तो फुल ही थे, एंड जनरल टेस्ट में कुछ था, मतलब 276 ऐसा कुछ था आउट ऑफ 300। तो वैसा सिचुएशन था। नाइस नाइस. हम्म। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत है टू मेक अ मोर लेवल हाँ प्लेइंग, बट यस. सो आई हाँ, वांट. बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। Yes, definitely. थोड़ा एक new system है, which might take a little time to adapt, but it is worth it because there are marking systems which are not consistent across the country, and all of us know it's majorly for that. So I would want to know a little brief of both of your college journey. Kinjal, I would like to start with you first. Okay, so my college journey has been vibrant, to be honest, because I found my passion in my college. So what I used to think was, because I'm pursuing CA, so I used to think, कि ठीक है, I will be a normal college student who will be running after CGPA and will be completing her CA lectures all the time, making notes of accounts and law, and that's what my college life would be, because I have heard from my seniors as well. That's what I've heard. But when I got into college, so I deferred my CA foundation attempt. Be very clear. So it's an experience. I'm telling it's a very good experience. I deferred my CA attempt because I was very unsure. Because I was, when I entered college, I wanted to explore everything, and that turned out to be very good. I got recommendation that don't join societies. Why? You're pursuing CA, inter RI, and you don't have time. So I joined societies. I got into DepSoc. DepSoc was one of my favorite societies. I went to debates. It was fun. It was really fun in my first year of college. Then I discovered my passion for mentoring and edtech. And eventually we started our edtech initiative, that is mine. We started working on that. We worked in brands, in big edtech brands as well. So that's what my first year of college looked like. A very vibrant experience where like I'm trying to find my passion for edtech and grow my like startup or initiative, whatever. Right. So in second year, when I came to second year, me and Ayushmaan started to explore many things as well, because when you build a initiative, you become very creative. Like you want to start new things, build organization as well. So then came YF, yeah, that is Youth India Foundation. We have opened a society in SRCC. We started a society in SRCC. That was a very enriching experience, because it's not easy to start your own societies. People lead the societies which are already present, but starting your own society takes a lot of efforts and guts. So that's what happened. And then we are building a consulting organization as well.
So, my college experience is a very varied experience where I have discovered passion for building organizations. I'm building mine. We are working on a consulting organization as well. Uh, Honestly, we are building an NGO as well. So, very varied experience. We are building a lot of organization, a very vibrant experience as well, and definitely a more enriching experience forward. That's very nice, very nice. A lot more than you had expected and a lot more diverse than you had expected. Very nice to hear that. Ayushman, what about you? हाँ फॉर श्योर। सबसे पहले तो व्हेन आई टेक्स्टेड किंजल फर्स्ट राइट, हम लोग टेलीग्राम पे मिले थे, तो शी वाज लाइक कि यार सीए करना है तो मैं तो पढ़ूंगी अच्छे से। मैं बोला हाँ यार मेरे को भी सीजी अच्छी रखनी है, कॉलेज जाएंगे। 1 वीक इनटू कॉलेज बस हमारा हो चुका था कि नहीं यार, जो सोचा था कि बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है वो होती है, इधर तो इतने सारे लोग नर्ड्स है बस पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब सम पीपल आर एक्सेप्शनल, आई एम टेलिंग यू। कुछ लोग इतने अच्छे हैं, उनसे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, जितना तुम 100 रेड बुल भी पी लो तब भी तुम्हें उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितना किसी और को काम करते देख के तुम्हें एनर्जी मिलती है। बट सम पीपल आर स्ट्रेट अप नर्ड्स राइट, वो लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ऑल दे केयर अबाउट इज सीजीपीए। एंड वो भी किस लिए, ऐसा नहीं उन्हें पढ़ना पसंद है, किसी को पसंद हो तो वो नर्ड नहीं होगा, वो अपने आप में दिखता है पैशन। बट दे आर जस्ट की प्लेसमेंट चाहिए अच्छी या सीए में रैंक चाहिए इसलिए बस पढ़ रहे हैं। बट हमें लाइक वी डिडंट फील लाइक कि वी बिलोंग देयर। सो हमने देखा कि और लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, दैट्स व्हेन वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द कांसेप्ट ऑफ सोसाइटीज। केस कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, तो मैं किंजल हम लोग का एक ग्रुप था, तो हम लोग सब साथ में मिलके केस कॉम्स करते थे। फिर हम लोग सोसाइटीज में गए, सो आई गॉट इनटू वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज देयर इज प्लेसमेंट सेल। सो द प्लेसमेंट सेल एसआरसीसी में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बट इट वाज सो अमेजिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टीम मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग थिंग्स अप मैं प्लेसमेंट सेल से सीखा। बिकॉज एक प्रोफेशनलिज्म आ जाती है तुम में, हाउ टू राइट मेल्स, कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, सीसी वर्क कैसे करते हैं। फिर मैं एफआईसी में भी था, एफआईसी में आई वाज द इवेंट हेड अपने फेस्ट के लिए। सो उसमें भी आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अगेन टीम को कैसे मैनेज करना है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो आई से कि जो भी मैंने इनिशिएटिव्स बिल्ड किया ना, मैंने कॉलेज में जो सोसाइटीज के एक्सपीरियंसेस लिए। अगेन ऐसा नहीं है कि तुम कोई सोसाइटी ज्वाइन कर लो तो यू गेट दोस एक्सपीरियंसेस, यू हैव टू लाइक तुम्हें मेहनत करके तुम्हें एक्सपीरियंसेस सीखने पड़ेंगे। यू हैव टू लाइक तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा कि तुम एक्सपीरियंस को कार्व आउट करो अपने खुद के लिए। सो इट्स ऑल योर एफर्ट्स उस केस में, सोसाइटी गिव्स यू द प्लेटफॉर्म फॉर दैट। सो आई डिड दैट। वंस दैट वाज सॉर्टेड तो उसके बाद में अगेन हम लोग बहुत सारे एडटेक में तो वर्क कर ही रहे थे आउट ऑफ आवर ओन पैशन। एजू कैप्टन में करा है, एजू शास्त्र में करा है, देन ग्राफी बन एकेडमी में भी करा है, एंड अभी टॉप रैंकर्स पे भी कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स। तो उसके बाद में वी वर लाइक स्टूडेंट्स को गाइड करना है, चलो खुद का प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। सो वो बस इट जस्ट हैपेंड, एक सॉर्ट ऑफ हैपेंड एक तरीके से। फिर दैट्स वेयर वी वी मेड इट, इसका नाम रख दिया माइंड मेंटरिंग इन योर डायमेंशंस, उसको स्केल करा। फिर वाईएफ आ गया, यूथ इंडिया फाउंडेशन, वी अप्लाइड। सो दे मेड मी द फाउंडिंग प्रेसिडेंट फॉर द सेम। सो उसको मैंने फिर सेटअप करा, उसमें भी बच्चों को लाए, उसका प्रमोशनल एक्टिविटी करना, बच्चों को उसके बारे में बताना। फिर सोसाइटी का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, इट वाज अमेजिंग। फिर वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट अनदर अपॉर्चुनिटी कॉल्ड लैंटर्न ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, which basically releases magazines quarterly and talks about social issues that are not talked about उतना ज्यादा with the urgency that's required. So उसमें भी we felt बहुत ज्यादा connected because social issues are something जो कि हमें बहुत पसंद है। So we are co-presidents there. उसके बाद में अगेन स्कॉलराइट कंसल्टिंग इज समथिंग जो कि मैं कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना बिल्ड कर रहा हूँ। सो किंजल इज ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर देयर। हमने पूरी टीम बना के रखी है, वी वर्क विद टॉप नॉच ब्रांड्स एंड उन्हें मतलब उस पर भी बहुत अच्छी टीम बना रखी है विद आईआईटीएंस एंड एवरीथिंग। सो बस ये सब चल रहा है। Nice, हाँ very हाँ, संघर्ष एक एक भूल गया कैसे हो सकता है। हाँ मतलब संघर्ष इज एन एनजीओ जो कि हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, इट्स तेलंगाना बेस्ड। सो ये सेटअप ऑलरेडी है, दे रीच्ड आउट टू अस एज स्टेट हेड्स। सो स्टेट हेड्स वगैरह का दिल्ली का यूनिट सेट किया, अभी मुंबई का यूनिट भी सेटअप कर रहे हैं। सो या इट्स बिन वेरी फन। good, good. Nice to hear. A lot of different things on plate and love the enthusiasm. Yeah, enthusiasm is the best part of college. The environment, the enthusiasm. And आपके enthusiasm को match करने वाले वो है. It takes me back to college days. Those मतलब my society days में कोई थोड़ा nostalgia हो रहा था. But चलो now coming to a little different question. So कोई अगर 12th में है एंड वो अनश्योर है कि उन्हें कौन सा कोर्स करना है या कौन से कॉलेज जाना है, हाउ वुड यू रेकमेंड, व्हाट आर द वन और टू मेजर थिंग्स जो अपने वो माइंड में रख सकते हैं? आयुष्मान, विल गो विद यू। हम सबसे पहले तो ऑप्शंस बियॉन्ड 12 को चेकआउट करना चाहिए। you're doing phenomenal work, building this, and अच्छा लग रहा है बहुत जान के, because ultimately democratizing access to all the information that's usually get kept through courses
दैट इज अ फिनोमिनल थिंग, लाइक बहुत अच्छी बात है ये तो. सो डेफिनेटली ये तो करना ही चाहिए. बाकी इन जनरल व्हाट आई से इज कि लिंक्डइन सबसे पहले अपना अकाउंट बनाओ, रीच आउट टू पीपल जिन्होंने मतलब अपना अपना कोर्सेज कर रखा है. मैं जब कंफ्यूज था कि मेरे को स्टीफेंस में जाना है, एसआरसीसी में जाना है, सुखदेव में, आई हैव रीच्ड आउट टू 100+ एलुमनाई. तो वहीं से मेरा नेटवर्किंग बहुत अच्छा हो गया था, बिकॉज आई हैड अ क्वेश्चन टू आस्क देम. बहुत लोग जब नेटवर्किंग करते हैं तो दे डू नॉट इवन हैव अ क्वेश्चन, बस हाय हेलो बोल के वो करते हैं, राइट. आई हैड अ क्वेश्चन कि मेरा ये सिचुएशन है, सो आप मेरे को हेल्प कर सकते हो क्या. सो फिर आई गॉट अ नंबर ऑफ अ लॉट ऑफ एलुमनाई, मैंने सबसे बात किया, आई गॉट टू नो कि कॉलेज को कैसे ट्रैजेक्टरी को कैसे नेविगेट करना है, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट गिव मी एन एज एक तरीके से. बट हाँ, मतलब आईड से कि लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, रीच आउट टू पीपल, जितने ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो, सबकी पर्सपेक्टिव्स लो, एंड देन अपना थॉट प्रोसेस बनाओ. सो इस चीज के लिए मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा. बाकी यूट्यूब पे बहुत कंटेंट रहता है, देखो. बट अगेन, कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा स्कैम टाइप का कंटेंट बनाते हैं, बस थंबनेल में वो कर दिया क्लिकबेट. डू नॉट रेफर टू दोस वीडियोस, बिकॉज अगेन इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया. बट जो लोग जेन्युइन कंटेंट पुट आउट करे, एक काम करो, बस सिंपल सोल्यूशन है, नया यूट्यूब अकाउंट बनाओ, उसमें जो तुम्हें अच्छे एजुकेटर्स लगते हैं उनको फॉलो करो, उनका कंटेंट को लाइक करो, देखते रहो. ऐसे तुम्हें बहुत सारे एजुकेटर्स रिकमेंड कर देगा यूट्यूब अपने आप. सो देन यू कैन फिगर आउट क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, एंड देन यू कैन फॉलो दोस थिंग. ऑटोमेटिकली तुम्हें सब समझ आने लगे. Nice, nice, very nice, nice approach. Kinjal, what about you? What are your thoughts? Okay, so I totally agree to Ayushman. This is the best approach to, find your dream course because it becomes very confusing sometimes. Like a same happened with Ayushman as well, right? He wanted to like keep a lot of options and then he got confused. So reaching out to someone who is already pursuing that, like who has already done that course is the best option available according to me as well. And like my experience was very clear. Like I was very clear because I was pursuing CA, so any other course would not match that, and CA is something I would never want to leave, right? So that's what made me choose BCom honors. I only gave 4 subjects. Like I do not wanted to, because when you're a CA student, it is very difficult to accept that you have to go outstation, leave your home and everything just for BCom, like our society does. Like just like Shreya ma'am said in the beginning, right? It is not that easy. So well, like that, if you make such professional commitments, you can consider that. Like you, if you want to pursue a professional course, like just like me, or any professional commitment in mind, you can synchronize your course with that. That is the best option, and never ever choose any course which doesn't synchronize. Like I've seen students choosing eco honors when they wanted to pursue CA. Like I did not see, like, okay, college does matter, but you know everything does matter, but choosing a course which is very different from your professional commitment will like not help you, you know do better things. Like you will not be able to do your professional course as well and the normal course as well. So think, sit, relax, and think what you want to do. Don't just rush after college brand names. It matters, but what matters is how you pursue your career, like your course and your commitments, right? So that's it. Yes, yes. Makes sense. Thank you. Thank you so much, both of you. I think more than anything, I think from my first conversation till now, I love the enthusiasm, the energy level, and optimism. I think it's extremely high, and starting off right like this in college is extremely amazing. And thank you so much for whatever you guys are doing on CUET. And I think yes, that's all I have. I'm extremely amazed with whatever you guys are doing. The energy is too good. So keep up it and keep the consistency. That's the main part. And I am sure you guys are gonna keep it up. Thank you so much for all the information over here. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.